Next chapter is connecting network. In Red Hat Enterprise Linux, Network Manager Service is used to start the network. जब भी Red Hat बूट होता है तभी नेटवर्क मैनेजर सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. This service is conveniently available from the graphical desktop as an icon that indicates the current status of the network. If your server doesn't employ a graphical desktop by default, it still uses Network Manager as a service. This service reads its configuration files during startup. जब भी सिस्टम Red Hat Linux बूट होता है तभी उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो सर्विस रीड कर लेता है एंड दैट सर्विस गेट्स अप. वेदर आपका ग्राफिकल इंटरफेस रहे या ना रहे तो भी नेटवर्क मैनेजर सर्विस Red Hat Enterprise Linux पे अवेलेबल रहता है. Now working with services and run levels. On RHEL environment, there are various services typically offered, which starts whenever server boots. The exact service startup process is determined by the run level in which the server boots. The run level defines the state in which the server boots. हर एक रन लेवल डिफाइन करता है कौन से स्टेट पे सर्वर बूट हो रहा है. एवरी रन लेवल इज रेफरेंस बाय द नंबर. हर एक रन लेवल का खुद का एक नंबर रहता है. कॉमन रन लेवल जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ नोन एज रन लेवल 3 एंड रन लेवल 5. रन लेवल 3 इज़ यूज जहाँ पे भी ग्राफिकल टर्मिनल अवेलेबल नहीं रहता है तभी रन लेवल 3 यूज़ किया जाता है. एंड ग्राफिकल whenever there is fifth is used to define a mode where the run level starts with a graphical interface. In each run level service, scripts are started. These scripts are installed in the etc init.d directory. A service script doesn't contain any variable parameters. All variable parameters are read while the service script starts, either from the configuration file in the etc directory or from the configuration file that uses which is stored in the etc sysconfig directory. वो जहाँ पे भी रहते वहाँ से रीड कर लेता है and the service gets started. To manage these service scripts, there are two commands are relevant. One is service and another is check config. Service command is used to start, stop and monitor all of the service scripts in the etc init directory. And next there is a check config command which can be used to enable the सर्विस इन द रन लेवल. चेक कॉन्फ़िग पे से कौन से स्पेसिफिक रन लेवल पे अगर हम लोगों को ऑन करना है सर्विस तो वी कैन मैनेज इट बाय द चेक कॉन्फ़िग. एनेबलिंग सर्विस, दिस इज एग्जांपल फॉर एनेबलिंग द सर्विस दैट इज चेक कॉन्फ़िग service name on. Here we are taking example as NTPD service, so check config NTPD on. और अगर डिसेबल करना है सर्विस then there is a command check config NTPD off. so जहाँ पे भी रन लेवल पे आपको डिसेबल ऑन करना है तो that check config command can be used by the system. Now we will see this on the terminal. Now to run this commands on any terminal you should be have a root access. Now type ls command to get a list of all service scripts. These are the all services which are currently in the init.d directory. Now we will check the status for the NTPD service by command service NTPD status. See, it's showing NTPD is stopped. Now we will start
the NTPD service command service NTPD start. This will be starting the NTPD. Now the NTPD service is running. So NTPD अभी स्टार्ट हो गया हमारा, बट आफ्टर द रीबूट इट वोंट बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली बिकॉज हम लोगों ने अभी टेम्परेरीली ऑन किया है. दिस इज़ नॉट इनटू अ परमानेंटली ऑन नहीं है जो बूट पे स्टार्ट होता रहेगा. सो अभी वी विल सी check config NTPD to add the NTPD service to the run levels of the server. So we will check chk config NTPD. So now if I can check config, so now NTPD is off. See, we have on the service by command service, but on check config NTPD is showing off on every terminal. So now if I make check config NTPD on, and if I check chk config, then NTPD on the second, third and fourth, fifth terminal. So if I again chk config NTPD off, and if I again do chk config, this shows NTPD is off on every terminal run level. So all 6 those run levels now NTPD is off. Now we will move further with our next point, that is configuring network with network manager. The easiest way to configure the network is by clicking the network manager icon on the graphical desktop of the server. सर्वर का ग्राफिकल डेस्कटॉप पे नेटवर्क मैनेजर का आइकॉन रहता है राइट हैंड साइड पे. वहाँ पे क्लिक करके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वी कैन मैनेज द नेटवर्क इजीली. अभी we will see on actual graphical desktop. See, this is the actual graphical desktop, and here there is a icon जो दिखा रहा है नेटवर्क का आइकॉन दिखा रहा है. Now if I open this edit connections, then हियर अभी यहाँ पे अपने को जो कुछ नेटवर्क रिलेटेड करना है वी कैन डू इट फ्रॉम दिस विंडो. यहाँ पे अपने को सब टर्न जो भी वायर्ड है सिस्टम ETH0 पे अभी हम लोग कनेक्टेड है. सो दिस शोज जो भी ETH0 मतलब लोकल कनेक्टेड वायर्ड नेटवर्क भी दिखाएगा, वायरलेस नेटवर्क भी दिखाएगा, और जो कुछ भी नेटवर्क्स अवेलेबल है दोज विल बी शोन ऑन दिस विंडो. And you can edit it from on this window whenever the graphical interface is available. If अगर graphical interface अपने पास available नहीं है, so then there is a utility tool known as system config network. On Red Hat Linux Enterprise Linux, in the system config network tool we will be दो ऑप्शंस मिलते हैं उस पे. वी विल हैव two options. The device configuration option that helps us
to set the address and other properties of the network card. And the second is the DNS configuration option, which allows us to specify which DNS configuration to be used. Now this we can see on actual terminal. System config network. This will start this window. यहाँ पे अपने को दो ऑप्शन मिल गया, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन. अभी हम लोग को अगर डिवाइस कुछ एडिट करना है, जैसे अपना अभी वो डिवाइस कौन सा दिखा रहा है अपने को, ETH0 दिखा रहा है, दैट इज़ नेटवर्क कार्ड अवेलेबल ऑन माय करंट सिस्टम. सो उसको अगर मेरे को एडिट करना है तो यहाँ पे आई कैन अगेन एंटर. सो अभी यहाँ पे मेरे को ETH0 डिवाइस का नेम रखा हुआ है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, वो दिया है. सो DHCP डालना है तो DHCP का रेंज यहाँ पे डालना पड़ा है, या स्टैटिक IP डालना है तो स्टैटिक IP डाल दो. डिफ़ॉल्ट गेटवे IP क्या डालना है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे. सो DHCP यूज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा. यहाँ पे प्राइमरी DNS डालना है एंड सेकेंडरी DNS डालना है. दिस सिस्टम टेक्स ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सेट नहीं किया है, DHCP से ही वो ले रहा है IP. सो यहाँ पे बाकी कुछ ऑप्शन दिखा नहीं रहा है. You can set it according to your requirement, no issues. Now next option is DNS configuration. यहाँ पे अपने को अपना जो प्राइमरी DNS है, सेकेंडरी DNS है, वहाँ उसका एंट्री यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं. अभी ये हम लोग का लोकल होस्ट है, लोकल सिस्टम है, तो फिर उसने खुद ब खुद जो भी है वो DNS ले लिया है local domain का. So now this is everything about system config network. Now next is understanding the network manager configuration files. In the directory etc sysconfig network scripts, you will find a configuration file for each network interface on the server. The names of all these files start with the ifcfg ifconfig minus and are allowed by the names of the specific network cards. ये जो डायरेक्टरी है यहाँ पे हम लोग को हर एक इंटरफेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सर्वर पे जो कुछ भी नेटवर्क इंटरफेस है, सपोज लैन कार्ड्स 5 लैन कार्ड्स रहेंगे तो फिर उसका भी हर एक डिवाइस के नेम से वो वहाँ पे फाइल रहता है, दैट कैन बी access directly. So this is the actual network configuration file. जो भी है अभी etc sysconfig network scripts में स्पेसिफिकली डिवाइस का जो कुछ भी फाइल्स है, दैट इज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल. अभी हम लोग के पास cat ifcfg pspa1. नाउ वी विल सी कि डिवाइस क्या रहता है. व्हाट इज दिस ऑप्शन? We will see what is the device option. Device specifies the name of the device as it is known on the server. जो कुछ भी है अभी, अब ETH0 रहेगा, मतलब नेटवर्क कार्ड का ETH0 रहेगा तो वहाँ पे ETH0 आता है. अभी P6P1 है तो P6P1 दिखाएगा. नेक्स्ट इज योर NM control. NM control specifies whether the device is controlled by the network manager service, which is the case by default. मतलब नेटवर्क मैनेजर उसको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑन बूट. ऑन बूट पे इंडिकेट्स दैट दिस डिवाइस इज स्टार्टेड व्हेन द सर्वर बूट्स. जब भी सर्वर बूट होता है तो फिर ये डिवाइस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा. नो दे दिया तो नहीं होगा, वो फिर बाहर जाके हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे येस डिफाइन है तो ये ऑटोमेटिकली येस ले लेगा. नेक्स्ट इज टाइप. टाइप इंडिकेट्स द डिवाइस टाइप विच इज़ टिपिकली एन ईथरनेट, बिकॉज ये नेटवर्क रिलेटेड है तो फिर उसके लिए अपना ईथरनेट कार्ड ही रहता है. सो नेक्स्ट इज बूट प्रो. बूट प्रो सेट
to DHCP if the device needs to get an IP address and additional configuration from the DHCP server. If set to anything else, a fixed IP address is used. बूट प्रो DHCP रिलेटेड जो कुछ भी IP लेना है उस रिलेटेड बूट प्रो काम करता है. नेक्स्ट इज डेफ राउट. Gateway that is set in this device is also used as the default route. डिफ़ॉल्ट राउट हमेशा yes ही रहता है बिकॉज जो भी गेटवे दिए देंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेता है. IPv4 failure fatal. This indicates whether the device should fail to come up if there is an error in the IPv4 configuration. अगर IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी गलत भी हुआ तो भी सर वो डिवाइस को अप करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यस लिया जाता है. और IPv6 इनिट हमेशा IPv6 इनिट सेट टू यस इफ़ यू वांट टू यूज़ IPv6. अभी IPv6 हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो फिर उसको नो कर देते हैं. देन नेम दिस यूज दिस टू स्टेट अ डिवाइस नेम. इस डिवाइस का जो कुछ भी नेम रखना है अपने को तो फिर वो कर सकते हैं. नाउ UUID as names of devices can change according to hardware configuration. It might make sense to set a universal unique ID. This UUID can then be used as a unique identifier of the device. UUID डिवाइस का हमेशा यूनिक ही रहता है. नेक्स्ट इज SW एड्रेस. हार्डवेयर का जो कुछ भी एड्रेस आएगा जैसे वो उसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं. दैट इज नथिंग बट द हार्डवेयर एड्रेस. IP एड्रेस इज द IP एड्रेस आइदर दिस इज स्टैटिक एड्रेस और द DHCP से जो आता है वो डायनामिक एड्रेस रहेगा. देन इट कम्स टू प्रीफिक्स. Prefix is variable define the subnet mask in CIDR format. ये जो prefix है that is for the subnet mask. The CIDR format defines the number of bits in the subnet mask and not in the dotted decimal number. So use 24 instead of 255.255.255.0. जो हम लोग डालते हैं वो अभी यूज़ नहीं किया जाता है. वो 24 डाल दिया तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेता है. नेक्स्ट इज गेटवे. दिस इज द एंट्री टू डिफाइन योर गेटवे that is used for a traffic on this network card. If the variable diff route is also set to yes, the router specified here is also used as a default router. DNS1. This parameter specifies the IP address of the first DNS. Server that should be used to use additional DNS servers use the variable DNS2 and if you like DNS3 as well. अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक ही डाला है तो DNS1 दिख रहा है. DNS2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो. And last is user CTL. User CTL set to yes if you want end users to be able to change the network configuration. ये हमेशा नो ही रहता है बिकॉज कोई भी आके एरा गहरा उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना चाहिए. ओनली रूट शुड डू दिस जॉब. सो यूज़र CTL हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट नो पे ही रहता है एंड देयर इज अ वेरी गुड आइडिया ऑन द सर्वर. नाउ वी विल सी एवरीथिंग ऑन एक्चुअल टर्मिनल. cd/etc sysconfig network scripts. Now if I check ls, this is shown all the device lists on the system. So if I want to check cat if cfg eth 0, see this is the
info about the network card. This is the whole info about the network card, which we have seen on example. Now next is understanding the network service scripts. The network configuration on the Red Hat Enterprise Linux is managed by the Network Manager service. While it is commonly necessary to restart a service after changing the configuration, but for Network Manager it's not required. Apart from the Network Manager services, that is etc/init.d network managers, there's also a network service named as etc/init.d network. The network service is what enables all network cards on your server. If you stop it, all networking जो कुछ भी है वो अपना बंद हो जाएगा. बट इफ नेटवर्क मैनेजर सर्विस हम लोग बंद कर देते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट्स जस्ट अ नेटवर्क मैनेजर प्रोग्राम. अगर हम लोग etc/init.d का बंद कर देंगे, नेटवर्क etc/init.d नेटवर्क बंद कर देंगे तो अपना पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. लेकिन etc/init.d नेटवर्क मैनेजर भी बंद कर देते तो उससे कुछ नेटवर्क पे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को. दैट इज़ द network scripts. Next is configuring and troubleshooting networking from the command line. To view all interface. The classic tool for manual network configuration and monitoring the interface, the command is ifconfig -a, which will handle all your network configurations. This command conveniently provides an overview of the current configuration of all network cards, including some usage statistics that show how much traffic has been handled by a network card since it's activated. जब इसे एक्टिवेट किया है तभी से क्या क्या हुआ है वो नेटवर्क कार्ड पे, that can be find out by this command. And the another command is IP address show. These two commands are used to handle the interfaces, that is the network cards. Now we will add a secondary IP address to the network card using IP tool. So now we will open the terminal, and doing all this thing, keep remember that we should have always a root access. Now I will put a command as IP address show. This will be shows me all local data, ETH0 जो device है उसका, and PAN 0. These things will be shown by the command IP address show. अभी यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क कार्ड कौन सा है, ETH0 है. So now we will add an IP address to this network card using the command IP address add dev device ETH0 192.168.0.71/24. जैसे हम लोगों ने देखा वो मास्किंग के लिए जो कुछ भी उसका वैल्यू हम लोग 24 डाल देते हैं. मेक श्योर यू आर यूजिंग अ यूनिक IP एड्रेसेस. सो नाउ इफ आई एम एड्रेस ऐड कर दिया, so now I will check by using command ping 192.168.0.71. see the reply comes down. मतलब जो कुछ भी अभी आप लोगों ने एड्रेस डाला था IP एड्रेस, तो वो उसको अप्लाई हो गया है. now use IP address show
दिस शोज अप, अभी हम लोग को दिख रहा है, दिस इज अभी पे ये भी दिख रहा है अपने को inet 7424, दिस इज द एड्रेस. नाउ if I put the command as if config तो फिर करंट नेटवर्क पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों को देखना है. सो वी वोंट बी एबल टू सी द सेकेंडरी आईपी एड्रेस व्हाट वी हैव एडेड, और जो आईपी एड्रेस शो कमांड जो शो कर रहा है वहाँ पे हम लोगों को वो सेकेंडरी आईपी एड्रेस दिख रहा है. दिस वे सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है ऑन अ ETS0 or whatever the Ethernet card is available on your system. Now next command is, now to show a specific interface command यूज करते हैं if config ETS0 जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. So now if I want to enable the interface or disable the interface, there are command known as if config ETS0 up, and to disable the interface command is if config ETS0. Now we will see this on terminal. We will see on terminal if config ETH0, directly ये वो हम लोग को ETH0 दिखा रहा है. So now if I do if config ETH0 up, it's already up. So now if I make it down, so now if I come if ETH0, this is shown. वहाँ पे हम लोग को IP नहीं दिख रहा है, पहले हम लोग को ये IP दिख रहा था, inet एड्रेस दिख रहा था, बिकॉज द कार्ड वॉज अप. अभी हम लोग का कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे. सो अगेन आई विल कमांड एज ETH0 up. So now moving further to the next command, checking the routing. जो कुछ भी हम लोग का to communicate on the network, your server needs to know which node to use at the default gateway, also known as the default router. So to see the current settings, we will use the command IP route show. Now we will see on the actual terminal IP route show. See, this is the actual output of it. ETH0 पे क्या चल रहा है is shown over here. So now our next command will move further with next, that is managing devices. For managing the devices, we have to use the two options, that is system config network, which we already seen previously. system config network कैसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से डिवाइस भी मैनेज होता है और अपना DNS भी मैनेज होता है. एंड नेक्स्ट इज IP लिंक हेल्प. वी विल सी दिस ऑन टर्मिनल. IP link help. See, this shows the whole details कैसे मैनेज करते हैं. अभी अकॉर्डिंग टू इतने ऑप्शंस है तो फिर उससे अच्छा वो सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क यूटिलिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा यूज़ करता है. बट दिस इज अनदर ऑप्शन टू हैंडल ऑल दिस डिवाइसेस. Assign IP address, netmask and broadcast. उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं if config and IP address
शो आईपी एड्रेस कमांड यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। टू व्यू ऑल इंटरफेस जब भी देखा तभी वहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग और आईपी एड्रेस कैसे शो करते हैं। द बेसिक डिफरेंस है, इफ़ जब भी हम लोग को सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऐड करना रहता है तभी वी हैव टू यूज़ दिस कमांड आईपी एड्रेस ऐड, तो उससे सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऑलरेडी ऐड, वो हम लोगों ने सब यहाँ पे देख लिया था टू जब भी इंटरफेस का हम लोगों ने देखा। नाउ नेक्स्ट कमांड इज एडिंग एंड डिलीट राउट। टू ऐड अ राउटर we have to use command route add, and to delete the route we have to use route delete. Next is to view a network status, that is a net stats minus rn, and another command is ip address. These two commands are used for the network status. मतलब जब भी कॉन्फ़िगर करना है, ट्रबल शूट करना है, we have to use these two commands. Then managing DNS मैनेज करने के लिए कमांड है dig कमांड लाइन से यूज़ करते हैं टू चेक द DNS इज वर्किंग और नॉट। वी विल सी दिस ऑन टर्मिनल। नाउ टू चेक द नेटवर्क स्टेटस द कमांड इज netstat minus rn. This will shows द आईपी राउटिंग टेबल का नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स क्या है, दिस इज शोइंग ओवर हियर। अभी अब मेरा आईपी क्या है, गेटवे क्या है, जन मास्क क्या है, नेट मास्क, दिस एवरीथिंग शोज ओवर हियर। और आईपी एड्रेस भी वही दिखा देगा। आईपी एड्रेस हम लोग को डिटेल में दिखा देता है कि कौन सा क्या क्या है। सो नाउ टू मैनेज अ DNS, नाउ इफ आई यूज द कमांड dig google.com, see if this returns all these records, which means your DNS entries are okay and it's working on your server. This is digging the DNS, this is A records, NS records of the google.com. This is the way to handle everything on the networking. So configuring and network troubleshooting networking from command line is completed.